Hello and good morning to everyone. Let me know whether I'm audible to you or not because your comments are not reaching me. Am I audible to you now? Just let me see your comments here from mobile because it is not visible there in my chat box. Am I audible to you loud and clear? Hello? Okay, it seems that the voice is clear now. Fine. So let me know if the external sound is disturbing you because it is cloudy here, raining continuously since morning. But anyway, we need to continue our studies, we need to continue our chapter. And in the last class, I had given you an overview of the book, an overview of the novel, or we can call it the collection of diary entries. And today we will go completely academic. Okay, means I'll focus your book, but before I begin, there is some questions for you. So if you feel like answering it, will you try answering the question? Let me begin with the easiest one. Tell me the date of birth of Anne Frank. Date of birth of Anne Frank. Fine. I was simply testing whether my voice is audible to me or not. How disturbing is the external sound. It reaches around 10 to 15 seconds to reach my voice there. Yeah, it's 12 June 1929. And the place of birth was Frankfurt, Germany, right? Frankfurt, Germany. Very good morning. Okay, so right from Frankfurt, Germany, they have shifted, they have moved to another place. And Anne Frank then was hardly 4 years. She was only 4 years old. So, can you tell me the place or the nation? Exactly, Netherlands or Holland can be said is the country where they had shifted, the family had shifted. And the reason was the conflict between the Hitler Nazis and the Jews. Right. तो उन लोगों ने तो अपनी सुविधा अनुसार जर्मनी छोड़ के नीदरलैंड गए, वहां पे मॉन्टेसरी स्कूल में एडमिशन लिया एंड दे वर हैविंग अ गुड लाइफ देयर. बट अगेन द नाजीज व्हेन दे ऑक्युपाइड, नाजीज ने जब जर्मनी से आगे अपने साम्राज्य को बढ़ाया, नीदरलैंड और हॉलैंड से ऑक्युपाई किया, तो वहां पे भी ज्यूज विरोधी कानून लागू कर दिए गए. राइट, सो दीज आर द डिस्कशंस फ्रॉम द प्रीवियस क्लास. तो वहाँ पे भी ज्यूज विरोधी कानून बना और जिसके तहत मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई जो भी रेस्ट्रिक्शंस था. I told you number of things that the Jews were not allowed to do even at their own place. So can you list out some among them? उनमें से कुछ बता सकते हो कि ऐसे कौन कौन से नियम थे जो पॉसिबली इस बुक में नहीं है, बट दोज हु हैड अटेंडेड माय लास्ट लेसन, लास्ट लेक्चर वुड डेफिनेटली कम टू नो. उनको पता रहेगा, उनको पता होगा ये. तो बता सकते हो ऐसे कुछ नियम, कुछ कानून जो ज्यूज के अगेंस्ट में था इन हॉलैंड, नीदरलैंड्स में. एग्जैक्टली, द फर्स्ट पॉइंट एंड साधना राइटली सेड, yellow star, they need to wear a yellow star around their neck. Yellow star लगा के घूमना होता था, which identified, which clearly indicated that they are Jews and they were allowed to stay by the grace of the Lord Hitler.
है ना, हिटलर कोई लॉर्ड से कम नहीं था। एग्जैक्टली, येलो स्टार पहन के घूमना होता था और क्या। जस्ट हम लोग 4-5 मिनट ये कुछ प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट कर लेंगे एंड देन आई मूव ऑन विद दिस। और अभी हम लोग पहला पार्ट तो पूरा कर ही लेंगे अलॉन्ग विद एक्सरसाइजेस, कॉम्प्रिहेंशन चेक। हाँ, वो बस जीविश के शॉप से ही सामान ले सकते थे ना, एकदम लिमिटेड टाइम बना दिया गया, जैसे अभी लॉकडाउन पीरियड में लिमिटेड टाइम बना हुआ है। राइट, हमारे इधर अभी अभी रिसेंटली कल परसों से ही खुला हुआ है, नहीं तो 2 बजे तक का टाइम बना हुआ था। और बहुत जगह पे टर्न वाइज चल रहा है कि आज ये दुकान खुलेगा, आज ये दुकान खुलेगा। एग्जैक्टली exactly. और क्या बता सकते हो बताओ। दो बातें आई, दे नीड टू वेयर अ येलो स्टार एंड दे नीड टू परचेज थिंग्स ओनली फ्रॉम द ज्यू शॉप। व्हाट एल्स, और क्या। हाँ, क्रिश्चियन से फ्रेंडशिप नहीं कर सकते थे, यदि आपके अपने फ्रेंड है भी तो ना तो आप उनके घर जा सकते थे, ना ही उनको अपने घर बुला सकते थे। ओके, थर्ड पॉइंट राइटली सेड, और क्या। और चाह रहा हूँ कुछ एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। हाँ, रिक्रिएशन से रिलेटेड था। हाँ, कार का यूज, इनफैक्ट कोई भी मोड ऑफ कम्युनिकेशन वाज नॉट अलाउड टू यूज। है ना, यदि खुद की भी कार है तो भी नहीं चढ़ सकते हैं, या तो साइकिलिंग करो या तो पैदल जाओ। एग्जैक्टली exactly, 4 पॉइंट आया, और क्या। हाँ, तो भी नहीं चला सकते थे। वेरी गुड वेरी गुड, ये क्योंकि ये सभी बुकिश बात नहीं है, ये हमारे चैप्टर में नहीं दिया हुआ है, आप लोगों ने मुझे सुना एंड दस यू आर आंसरिंग मी ऑन द ग्राउंड ऑफ लिसनिंग। ये सुनने का ही नतीजा है कि आप लोग बोल पा रहे हो, क्योंकि ये हम लोग बियॉन्ड द बुक बात कर रहे थे। और क्या बताओ। आई एम फीलिंग ग्लैड दैट यू आर आंसरिंग मी, सो आई वांटेड यू टू आंसर मोर। और ऐसे रिस्पॉन्स मिलते रहे तो फिर मुझे खुशी हो गया, आई कैन गिव यू समथिंग मोर देन द बुक। और बताओ, कुछ एंटरटेनमेंट सोर्स ऑफ रिक्रिएशन से रिलेटेड भी कुछ था। यस, दे वर। हाँ हाँ, ये तो था ही। शॉप जाना है तो लिमिटेड टाइम पे। दे वर नॉट अलाउड टू एंजॉय एनी थिएटर। वो लोग थिएटर नहीं जा सकते थे, खेलने के लिए स्टेडियम में नहीं जा सकते थे। तो तब के समय में सोर्स ऑफ रिक्रिएशन, अभी जैसे हमारे पास मोबाइल है, हाई लेवल एकदम इंटरनेट कनेक्शन है, तो हम लोग एक घर में बैठ के अपना दिन गुजार लेते थे। बट तब के समय में जब इतना कुछ नहीं था, दे यूज्ड टू एंजॉय द थिएटर, नॉट इवन द सिनेमा हॉल, बट थिएटर, वहाँ पे लाइव ड्रामा प्ले होते थे, है ना। ऐसा, तो थिएटर नहीं जा सकते, खेलने कूदने के लिए मैदान में नहीं जा सकते, स्टेडियम में नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ कहीं मिलके घूमने नहीं जा सकते। तो इतनी सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। राइट, अब आप समझ सकते हो इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस में जितना कितनी जीना कितना दूभर हो जाएगा। राइट, सो दे स्टेड सच अ लाइफ। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा थ्रेट हमेशा मन में एक बड़ा डर बना रहता था, वो किस बात का, कहीं कंसंट्रेशन कैंप के लिए लेटर ना आ जाए, concentration कैंप का बुलावा ना आ जाए। एंड यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ concentration कैंप। हेलो लियो गेम। कंसंट्रेशन कैंप का नतीजा हम सभी को पता है, राइट। अब नहीं तो जस्ट हैव अ लुक। मींस कंसंट्रेशन कैंप इज इक्विवेलेंट टू डेथ। शायद ही वहां से कोई बच के आते थे, ऐसा नहीं है कि बचते थे। इवन एन फ्रैंक्स फादर ऑटो फ्रैंक wants concentration camp survival। हाँ, मिस्टिकल गेम को वेरी गुड मॉर्निंग। तो एन फ्रैंक के फादर ही कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइवल थे, पूरा फैमिली कंसंट्रेशन कैंप में मर गया। इसीलिए उनके मरने का एग्जैक्ट डेट नहीं है, अंदाजा लगाया गया। डेथ मार्च पे चल रही थी, दे वर प्लेग्ड विद डिजीजेस, है ना, क्योंकि नाम मात्र का खाना मिलता था, कोई हेल्थ हाइजीन का कुछ भी नहीं है। ओके, तो मतलब हिटलर का तो इंटेंशन ही होता था ना कि इनको मार ही दे। Yeah, hi, hello, Leo Gaming. If my voice is reaching you, you have asked me, you have helloed me thrice. Hello. चलिए आगे सुनना। अच्छा, केसर है यहाँ पे, किस नाम से, मिस्टिकल या लियो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने राइटिंग तो अपने बुकिश पार्ट पे आते हैं। और ध्यान देना आप सभी का बुक आपके सामने रहे तो बेहतर होगा, कुछ नया वर्ड्स मिलेगा। वी विल एनरिच आवर वोकेबुलरी टू एट द सेम टाइम रीडिंग प्रैक्टिस इज मस्ट। अब तक तो आप सभी का रीडिंग एकदम बेहतर हो गया होगा। तो लेटिंग यू अ टास्क, अब आप सभी को एक काम मैं दे रहा हूँ, एक होमवर्क मैं बाद में ग्रुप में भी लिख के डाल दूंगा। You need to send me. Okay, mystical dimple में सुहानी है. Fine. You need to send me your audio. Okay, this is a task for you. Reading at least a paragraph of English book. इंग्लिश बुक के एक पैराग्राफ को पढ़ते हुए आप व्हाट्सएप पे कहीं पे भी अपना ऑडियो रिकॉर्ड करोगे। ओरिजिनल आपका होना चाहिए, उसमें एडिटिंग नहीं चलेगा। ठीक है, आप भले आप 10 बार प्रैक्टिस करके कर लो, बट ट्राई टू सेंड मी द बेस्ट। मुझे आपका रीडिंग सुनना है, हाउ यू रीड, बिकॉज इन दिस ड्यूरेशन, in this free hour, you might have developed at least the reading capacity, at least the reading skill, right? So I wanted you to send me the recorded paragraph, and I will send the sample। जो भी सैंपल रहेगा, जो भी मुझे वहाँ पे मॉडल रीडिंग जैसा लगेगा कि हाँ ये सबसे बेस्ट है, उसे मैं सभी ग्रुप्स में भेजने वाला हूँ। इनफैक्ट हमारे स्कूल में सभी क्लासेस का अपना ग्रुप बना हुआ है ना। तो आई एम गोइंग टू मेक दैट एज अ मॉडल रीडिंग, उसे मैं मॉडल रीडिंग बनाऊंगा। ठीक है, और मैं सभी बच्चों को भेजूंगा वो। So I want you to participate in the matter actively and send me the audio. Okay, I'll definitely provide you the feedback. और बेहतर रहेगी तो जो सही है औरों तक पहुंचना ही चाहिए ना। So make it a task and take it as a serious homework. Okay, you must do it. चलिए अब आगे बढ़ते हैं। See, there is a single page to study today. अभी का हमारा टारगेट बस एक one single page है। We will understand and the vocabulary will be added, and there are three questions in comprehension check. We will answer that too. ये questions मैंने आपको बताया था पहले भी कि ऐसे homework करना है, but still, though we are discussing the chapter here, the part here, we will discuss the exercises too. In the very first paragraph, writing in a diary is a really strange experience for someone like me. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old schoolgirl. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing. And I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. तो व्हाट इट सेज हियर, एक नया वर्ड मिलेगा, हो सकता है एक से ज्यादा है। म्यूजिंग, MUSING। कैन यू टेल मी द मीनिंग? मीनिंग बता सकते हैं मुझे म्यूजिंग का? म्यूज, MUSE इज द रूट वर्ड। वेदर इट इज मेंशन्ड, नो, साइड में मीनिंग नहीं दिया हुआ है। म्यूजिंग मीन्स थिंकिंग, सोचना, थॉटफुलनेस, थिंकिंग बोल सकते हैं। ओके, आइडिया। बिकॉज व्हेन वी राइट अ डायरी, डेफिनेटली वी नीड टू थिंक, वी नीड टू म्यूज, है ना, हमें थिंकिंग करना होता है। तो म्यूजिंग का मतलब आप राइट इन द नोटबुक, एड द ग्लोसरी, थिंकिंग। So what she says, writing in a diary is a really strange experience for someone like me, because this is the first time she is sitting to write a diary. And yesterday we had discussed, you will answer me this question. Diary was her birthday gift, right? So which birthday was she celebrating then? उनका कौन सा बर्थडे, मतलब कितने नंबर का जन्मदिन था, उनको डायरी गिफ्ट मिला और वहां से वो लिखना शुरू की। एग्जैक्टली, दैट वाज हर 13th बर्थडे। और 13th बर्थडे किस साल आएगा? नाउ टेल मी द ईयर, टेल मी द ईयर। 13th बर्थडे, अग्रीड, ऑल आर करेक्ट। टेल मी द ईयर, साल बताओ। उस साल उनको, नो नो नॉट 16, 13th बर्थडे है तो किस साल आएगा? तो इट इज 1942, है ना, 1942। 1942, 32 नहीं, 1942। 1942, लेकिन 1929 था ना उनका डेट ऑफ बर्थ, तो 1942 13th बर्थडे।
She was given the diary as a gift and therefrom she started writing. वहां से उन्होंने लिखना शुरू किया and she expressed herself fully, completely. She has kept her mind and heart out in the diary because she had friends, but she hardly considered them worth sharing each and everything. दोस्त तो उनके काफी थे, but she hardly considered them worth sharing each and everything, and thus diary remains very close to our hearts, isn't it? We share, we speak everything as a very trustworthy, faithful friend. Very good morning, Pooja. We are 15 minutes late. Okay. Sorry. So what she says that it was a strange experience to write a diary for her. Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on, neither I nor anyone else will be interested in the musing of a 13-year-old girl. So we are interested, right? तब वो जो सोच रही थी कि वो पहले लिखी नहीं है इसलिए डायरी लिखने में उनको मजा नहीं आ रहा या स्ट्रेंज लग रहा है, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये सोचा कि एक 13 साल की छोटी लड़की का जो सोच है जो वो डायरी में लिख रही है, कौन इंटरेस्ट लेगा इस पे, है ना। मीन्स एक 13 साल की बच्ची का लिखा हुआ कौन पढ़ेगा, शायद मैं खुद भी नहीं पढ़ूंगी। वो बोलती है neither I nor anyone else will take interest of the musings in the musings of 13-year-old girl। कौन इंटरेस्ट लेगा। लेकिन इंटरेस्ट लिया ना लोगों ने। सबसे पहले उनके पापा ने इंटरेस्ट लिया, ये बुक छपवाया, लोगों को पसंद आने लगा, बुक बिकने लगा। हमारे सॉरी हमारे सीबीएसई बोर्ड अथॉरिटी को ये पसंद आ गया, हमारे सिलेबस में डाल दिया, है ना। तो हम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं और इंटरेस्टिंग भी है, मैं बोल भी रहा हूँ कि है तो मैटर काफ़ी सीरियस, बट आप एक टीनेज गर्ल को देखोगे, आप खुद को उनके राइटिंग में पाओगे। ओके, बिकॉज सी हैज एक्सप्रेस्ड हरसेल्फ होल हार्टेडली। ओके, मूविंग ऑन। तो यहाँ तक लाइन क्लियर है। ओ वेल, इट डजंट मैटर। फिर थोड़ी देर में डैम केयर, छोड़ो किसी को पसंद आए नहीं आए, खुद की खुशी के लिए जो करना चाहिए वो करेंगे। दैट शुड बी द एटीट्यूड, that should be the way of living, because if we keep on thinking about others we will hardly get time to smile, है ना। हमारे चेहरे का स्माइल भी जैसे चला जाएगा। So let them think whatever they will do, let them do their task, we will think of ourselves, we will do in our way so that we can be happy. Again, so this was her attitude. Oh well, it doesn't matter. I feel like writing, and I have an even greater need to get all kinds of things off my chest. OFF off is a preposition which suggests separation. So as if she has number of things over her chest and she wanted to put it off. तो बहुत सारी बात माइंड में चल रहा हो तो फिर भारी भारी सा हो जाता है, लाइफ थोड़ा बोझिल हो जाता है। बट जैसे हमें कोई मिलता है टू एक्सप्रेस आवरसेल्फ, वी मे कीप आवर हार्ट एंड माइंड आउट टू देम, वी फील रिलीव्ड, राइट। हम लोग थोड़ा रिलैक्स महसूस करते हैं, हम लोग रिलीव्ड महसूस करते हैं। So she had a number of things to say, and she hardly considered her friends worth sharing, and thus Diary became her intimate friend. Diary became her very close friend, and she expressed herself. And sharing with Diary, writing in the diary, she feels very much relieved. उनको काफी आराम, उनको काफी अच्छा महसूस होता है, जैसे मन का बोझ उनका अब निकल गया। Again, so she hardly cares about the world. Oh well, it doesn't matter. It doesn't matter what the persons will think. What matters, I will keep my burden out of my chest. That matters. So she went on writing. अगला लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सो अंडरलाइन द स्टेटमेंट, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। इसे अंडरलाइन कर लो। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। समझ रहे हो, पेशेंस मतलब क्या, धैर्य। पेपर will never protest. People paper will agree to each and everything we wanted them to know.
Okay, so paper have more patience than people. आपके बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड है, उनसे भी तो कभी कभी रिलेशन खराब हो जाता है, कभी कभी बात नहीं बनती है, कभी कभी आप जो शेयर करना चाहते हो वो विरोध करते हैं, या फिर कभी कभी आपके शेयरिंग का उन पर बुरा असर पड़ जाता है, आप बोलते कुछ और हो, वो अलग तरीके से ले लेते हैं, एंड रिलेशन कहीं ना कहीं क्रैक होता नजर आता है, राइट? दिस इज व्हाट हैपेंस। और आपके जितने भी बेस्ट से भी बेस्ट फ्रेंड्स क्यों ना हो, तो थोड़ा बहुत कभी कभी तो ऐसा हो ही जाता है, राइट? एंड thus he says paper has more patience than people. ओके, और इस लाइन में आप देखोगे एक साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, पेपर हैज मोर पेशेंस दैन पीपल, पेपर पेशेंस पीपल। 10 सेकेंड लेना, जल्दी से बता दो द फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द लाइन। I mean the repetition of consonant sound. What do we call it? Vowel sound is repeating regularly. What do we call it? Very good, Rajani. That is alliteration. Alliteration. Okay. See the second paragraph. The first paragraph में बहुत tough words तो नहीं है. Musing was the word. Exactly. All are correct. Vishnu, Agit, Raj Narayan, Siddharth, Rajini. Yeah, all are correct. मानो इज दिया, सॉरी वही मैं सोच रहा था कि इसके पीछे का नाम। Fine. So paper has more patience than people. I thought of this saying. No one of sorry. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. Chin in my hands. Chin, है ना? इसे chin बोलेंगे hand. तो chin in my hand मतलब वो सोचने का एक posture. बोझ एंड लिस्टलेस, या लिस्टलेस हमें मिला था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में भी। अच्छा, यहाँ पे मीनिंग दिया हुआ है विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट। आपके एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, ऑनलाइन एग्जाम वाले में। Wondering whether to stay in or go out, I finally stayed where I was. Brooding, a new word to you. Brooding, Brooding. Brooding, meaning बताओगे, तब तक मैं पैराग्राफ देख रहा हूँ। Yes, paper does have more patience. And since I'm not planning to let anyone else read this stiff backed notebook, stiff backed notebook, grandly referred to as a diary. Unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Exactly. So brooding also means thinking, सोचना, seriously thinking. मतलब सीरियसली सोचना, गहन सोच में खो जाना। ओके, देखिए अब इस पैराग्राफ में वो क्या बोलती है। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड। जब वो थोड़ा लो फील कर रही थी, डिप्रेस फील कर रही थी, तब उनके माइंड में ये बात आया कि किसी को भी अपनी परेशानी क्या बताना, लोगों में पेशेंस ही नहीं है। पेपर हैज मोर पेशेंस, पेपर्स में ज़्यादा पेशेंस है दैन पीपल, है ना? तो पेपर एक तो हमेशा वो हमारा साथ देने को तैयार रहेगा, कभी भी हमारा साथ छोड़ के जाएगा नहीं, और उनके साथ हम लोग पेपर्स के साथ, डायरी के साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं। ओके, तो ये तब उनके माइंड में आया जब वो डिप्रेस फील कर रही थी, एंड शी वाज सिटिंग एट होम विथ हर चिन इन हर हैंड्स, मतलब वो सोचने की मुद्रा में बैठी हुई थी। शी वाज फीलिंग बोर एंड लीस्ट enthusiastic, एकदम बोरिंग और लिस्टलेस वो महसूस कर रही है। वॉन्डरिंग, वॉन्डर, वॉन्डर नहीं है, वॉन्डर है। वॉन्डर का मतलब भी वही होगा, थिंकिंग। ओके, आश्चर्य वाला सेंस। सो वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, घर पे रहें या बाहर जाए, ये सोच रही थी। एंड फाइनली सी स्टेड वेयर शी वाज, जहाँ पे वो बैठी थी वहीं पे ही वो बैठी रह गई। Again, and finally I stayed where I was, brooding. Yes, paper does have more patience. This thief-backed notebook, thief, sorry, stiff back, स्टिफ बैग मतलब नोटबुक का, या फिर हम लोग डायरी का जब लेते हैं तो इसका जो बैक है, मतलब ये बैक कवर बोलो या फिर फ्रंट कवर बोलो, इट रिमेन्स थिक, थोड़ा थिक रहता है ना? तो थिक बैक नोटबुक जिसको डायरी बताया गया, विच सी सेड डायरी, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference.
So it will be there itself as it is unless I find a real friend, a friend of trust, a faithful friend who I can completely rely upon. This is never going to bring any difference. मतलब ये जैसा है वैसा ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा जब तक मुझे वैसा दोस्त ना मिल जाए जिसके साथ मैं सब कुछ शेयर कर सकता हूँ, एज आई शेयर विथ माई पेपर्स, एज आई शेयर विथ माई डायरी. Sit off, sit safe. Now, I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. Underline the point. Prompt मतलब होता है उकसाना. Okay, because before her 13th birthday, she was not so much engrossed and engraved in the diary writing. But now, something, the situation, the surrounding, the friends prompted her, encouraged her, trained her to keep diary, to give diary the first preference. डायरी को पहले जगह पे रखने का या डायरी को देने का पहला प्रेफरेंस देने का सिचुएशन उनको अपने फ्रेंड से, अपने सराउंडिंग से, अपने आप से मिला. एंड सी हैज मेड डायरी द फर्स्ट चॉइस. सी हैज केप्ट डायरी एट द वेरी फर्स्ट प्लेस बिकॉज द रीजन वाज एनीवन, एनी गर्ल ऑफ टीनेज या कोई भी अपने मन में बोझ को लेके तो जीना नहीं चाहता ना. दे वांटेड ये ऐसा कोई तो पार्टनर हो जिनके साथ सब कुछ शेयर कर सके, पूरा रिलीव्ड महसूस कर सके. So the prime requirement, the prime need was best friends, close or intimate friends, which she was lacking, and thus diary became her first choice and her first friend. तो बता सकते हो डायरी को उन्होंने जब फ्रेंड के जैसा ट्रीट किया, सी हैज नेम्ड द डायरी. डायरी को उन्होंने पर्सनिफाई किया है, डायरी का नामकरण किया है. बता सकते हो उनके डायरी का नाम क्या था? अपने सभी एंट्री में वो लिखा करती थी डियर डैश. क्या? डियर किटी. एग्जैक्टली अंकित, वेरी गुड. सो Kitty was her best friend. Kitty was personified in her diaries. किटी के साथ वो ऐसे बात करती है जैसे सामने में उनका बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ हो और वो उनसे बात कर रहे हो. किटी उन्होंने अपने डायरी का नाम रखा. ओके, तो आई डोंट हैव एनी फ्रेंड, आई डोंट हैव अ फ्रेंड, इसे आप अंडरलाइन कर लेना. वेरी गुड मॉर्निंग रिया, इट इज योर लेट विश. 9 बजे विश करना था मुझे. ओके, इट्स 27 minutes late. Fine. So let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, no one will believe. Because at that stage, we provide first preference to our friends. And thus, every student, every girl, every children, or the boy or the girl, they give more importance to friends. इस एज में फ्रेंड्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और वो इसीलिए क्योंकि सभी का बेस्ट फ्रेंड्स रहता है टू whom they can share everything. And thus he says, let me put it more clearly, और अच्छे से बताने दो मुझे. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in this world. Alone in this world. देखो अब वो अपने पेरेंट्स को भी अपना दोस्त नहीं मानते. तो जब आप 13 के थे, मतलब यदि आप 15 या 16 के हो तो खुद को इमेजिन कर सकते हो व्हेन यू वर इन 7th और 8th स्टैंडर्ड, क्या आप पूरी दुनिया में खुद को अकेला महसूस करते थे. यू हैड नो वन इन दिस वर्ल्ड. मान लो दोस्त नहीं भी होते हैं, घर पे कजन्स होते हैं, अपने भाई बहन होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं या पेरेंट्स होते हैं वैसे फ्रैंक जिनके साथ हम सब कुछ शेयर कर सकें. और ज़्यादातर के साथ 90% लोगों के साथ तो उनका दोस्त होता है ना. टू हो शी कैन, ही और शी कैन शेयर एवरीथिंग. तो आपके साथ तो ऐसा नहीं था, बस 13 साल की लड़की को ऐसा महसूस हो रहा है दैट सी हैज नो वन इन दिस वर्ल्ड. दुनिया में कोई है ही नहीं उनका अपना. सी इज ऑल अलोन, है ना. वो अमेंडा की तरह पूरी दुनिया में अकेली है. अमेंडा तो थोड़ी देर के लिए सोचती है ना, रिलेट करना, क्योंकि इसी में हमने अमेंडा को भी पढ़ा है. ओके, एंड आई एम नॉट, आई हैव लविंग पेरेंट्स. तो देखिए एक तरफ वो क्या बोलते हैं, कम्प्लीटली ऑल अलोन इन द वर्ल्ड, किसी को विश्वास नहीं होगा, है ना. और फिर वो बोलती है एंड आई एम नॉट, मैं मतलब मेरे साथ ऐसा नहीं है कि मैं पूरी दुनिया में अकेला ही हूँ. इट्स नॉट दैट.
with her because she has loving parents and a 16-year-old sister. So she was 13 then, and her elder sister, 3 years older to him. Very quickly, name the elder sister. जल्दी से मुझे बड़ी बहन का नाम बता दो. Till then, I'm going on with a line or two. And there was about 30 people I can call friends. I have a family, loving aunts, and a good home. No, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. Again, so she says that I have elder sister, 3 years older, named Margaret Frank. I have a loving, caring family to whom I can call friends. Means I can count 30 such names, 30 such persons to whom I can call friends or well acquainted to me, but still she feels herself all alone. Okay, it's better to live with ourselves because everyone is unique in their own way. This is very mystical way of thinking. That's good. Means it would be somewhat supernatural thought, isn't it? Highly philosophical. So C two thought such that C has number of persons और है ना ऐसे गानों में मतलब इतने लोगों के हजारों के भीड़ में भी वो अकेला हो गया, अकेला रह गया, तन्हा रह गया. कौन सा था गाना? शी वॉज थिंकिंग इन द सेम मैनर, है ना, कि लोग तो बहुत हैं, फ्रेंड्स में वो 30 लोगों को गिना सकते हैं. शी हैज वेरी लविंग केयरिंग पेरेंट्स. ओके, एल्डर सिस्टर और बहनों के साथ तो अपना बहुत बनता है ना. बहन बहन तो आपस में बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. सी कंसिडर्स herself friendless. She considers herself all alone in this world, whereas there are number of persons to say. कहने को बहुत सारे लोग हैं. Okay, so she says, I have loving family, loving aunts, and a good home. On the surface of it, मतलब बात के तह पे ये भी देखें, on the surface, I seem to have everything except my one true friend. On the surface, तो ऊपरी तौर पे, मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो सभी कुछ है मेरे पास. रहने का, खाने का, दोस्त, परिवार, फैमिली, रिलेटिव्स, सब कुछ है. बट if we think the deep rooted way, she finds herself all alone. When she deconstructs everything, she finds no one standing by her. So ये भी हो सकता है कि 13 साल की ही है तो उस उम्र में कितना हमारा फिलोसॉफिकल थिंकिंग डेवलप हो पाएगा. तो उनको बस ऐसा लगता है क्योंकि टीन एजेस में तो हमारे पेरेंट्स के साथ रहना हमें हमारे लिए प्रॉब्लम लगता है ना. अमेंडा को जैसा महसूस होता था, पता है ना, हर बात पे आपके पेरेंट्स आपके सामने खड़े रहें कि मैं आपके सपोर्ट में हूँ. इन दैट कंडीशन यू एट नंबर ऑफ प्लेसेस मेनी अ टाइम्स यू विल फाइंड योरसेल्फ इन ट्रबल. लगेगा कि नहीं मुसीबत मेरे ही साथ खड़ा है. whereas they are there to support you. Anyway, moving on. all i think all I think about when I am with friend is having a good time. तो फ्रेंड्स उनके बहुत सारे हैं, एकदम मन से वो किसी को एक्सेप्ट नहीं करती है, बट ऐसा मानती है कि जब मैं अपने दोस्तों के साथ रहता हूँ, आई हैव अ गुड टाइम, आई एंजॉय अ गुड टाइम. उनका समय काफ़ी अच्छा बीतता है. आई कैन नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. And what she shares among the friends, with her friends, the ordinary everyday affairs, the ordinary everyday matters. She hardly shares the thing which is burdened over her heart, which she want to outburden it. She hardly shares that thing. तो इधर उधर का ऑर्डिनरी बात, अपने डेली डूइंग्स का बात वो करती है, बट जो उनके मन में है, जो भी उनका पर्सनल ओपिनियन फीलिंग, दैट शी हार्डली शेयर्स विद फ्रेंड. और इस एज में हमारे मन में बहुत सारा पर्सनल मैटर रहता है ना. अंदर से बहुत सारा शायरी निकल रहा होता है और इसे शेयर करने के लिए वैसे दोस्त चाहिए होते हैं, विश्वास के पात्र. और एल्स फिर पूरा रायता फैल जाता है, क्या मामला बिगड़ जाता है. Okay, so I cannot bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. We don't seem to be able to get any closer, and that is the problem.
That is the problem. We don't seem to get any closer. They were close, they were standing together, but she finds herself aloof and alone, secluded out of the crowd, away from their so called close or true friends, because she is unable to share her inner feelings. She is unable to put her burden off the chest. And that is the problem. You don't seem to be able to get any closer. ये था बड़ा समस्या. She don't find, she don't think that they are worth sharing. They are so close that she can share each and everything to them. That is the problem. Maybe it is my fault that we don't confide in each other. Confide means what? Okay, the meaning is given in the right hand side. To tell person things privately to a person that one trusts. Confide, सीमित करना. So she hardly finds such friends to confide to whom she can open her mind and heart, and she will even have the trust that they will not leak the matter. They will not further say these things to anyone else. So that trust was not there. कि वो अपने पूरे मन की बात बताए और फिर वो इतना विश्वास कर सके कि ये लोग किसी और को नहीं बताएंगे. इतना विश्वास नहीं था, ऐसा विश्वास नहीं बना पाए थे, है ना. और वो बोलते कि शायद मेरे में फॉल्ट है, मैं इतना विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं इन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले पा रहा हूँ कि ये लोग ऐसा नहीं करेंगे. हो सकता है वो लोग उनके सोच से बहुत अच्छे हैं, है ना. बट वो जो सोच रही है वही लिख रही है. In any case, that is just how things are. And unfortunately, they are not liable to change. This is why I have started the diary. So, but it is the fact. The person will definitely behave in the way they are in, the nature they have accumulated, the inbuilt quality, the default quality that they have received from their ancestors. Definitely they will behave in that manner. तो हम अपने अनुसार पूरी दुनिया को कैसे चेंज करना चाहें, है ना. सब अपने अपने तरीके से बिहेव करेंगे, जैसे एन फ्रैंक भी तो अपने तरीके से बिहेव कर रही है, राइट. तो देखो मैटर समझना बहुत टफ नहीं है. इन एनी केस दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर. किसी भी केस में लोग जैसे हैं वैसे तो रहेंगे ही ना. हमारे अनुसार पूरी दुनिया क्यों चलेगी. हम भी तो दुनिया के अनुसार नहीं चल रहे हैं, हम भी तो अपने अनुसार ही चल रहे हैं. तो कोई हमारे लिए क्यों खुद को, अपने नेचर को, अपने डिफॉल्ट क्वालिटी को, अपने इनबिल्ड इनहेरिटेड कैरेक्टर को चेंज करेगा. इट इज टफ. चेंज हो सकता है, उसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, नया अपडेटेड वर्जन आ सकता है. बट हम चाहेंगे कि मेरे अनुसार पूरा दुनिया चले, ऐसा नहीं हो सकता. क्योंकि दुनिया आपके अनुसार नहीं चलेगा और आप दुखी हो जाओगे, तो आप लाइफ टाइम दुखी रहोगे, ये मान के चलना. तो आपको खुद को मोल्ड करना है, या फिर आपको खुद को अपनी खुशी का कारण ढूंढना है. पीपल विल बिहेव इन देयर मैनर, वो तो अपने तरीके से बिहेव करेंगे, है ना. सो दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर. ऐसे ही होता है. और उस एज में उनको वो मैच्योरिटी आ रहा था, बिकॉज ही वाज थिंकिंग डीपली. राइटिंग के लिए तो सोचना जरूरी है ना. And unfortunately they are not liable to change. Unfortunately they are not liable to change. They will not change. And why should they change? And Frank is not changing herself according to her friends. And भी तो अपने आप को फ्रेंड्स के अनुसार नहीं बदल रही है ना. एंड अपने आप में ओरिजिनल वर्जन है, तो दूसरे भी तो अपने आप में ओरिजिनल वर्जन है, भले ही वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, सही हो, गलत हो, राइट. तो ऐसे में हमें वेटिली बिहेव करना पड़ता है. अब यदि एन चाहेगी कि नहीं, मैं अपने मन की बात किसी को नहीं शेयर करती हूँ, सो हर फ्रेंड्स टू मस्ट नॉट शेयर द ओपिनियन और द टॉक और द आइडियाज विद एनीवन. तो हो सकता है एन का नेचर है शेयर नहीं करने वाला, वो अपने आप में इंट्रोवर्ट रह सकती है, लेकिन लोगों का नेचर होता है वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, है ना. एक्सट्रोवर्ट वो लोगों के साथ ज्यादा ओवर फ्रैंक रहते हैं. दे डोंट कीप द मैटर विद इन देम. So there are such persons. So when we are not ready to change ourselves, why shall we demand? Why shall we want others to change? Right. So at some places and things. So खुद भी सोचती है. Possibly it may be my fault कि मैं ओवर एक्सपेक्टेशन रख रही हूँ दूसरों से.
and this is the reason she has started with a diary. तो वो बिना लोगों का सोचे, बिना उनसे एक्सपेक्ट कुछ किए, वो डायरी के साथ लिखना शुरू कर दिया, because paper has more patience than people. This is the known fact. Last paragraph, 3 4 lines. To enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, sorry, हाँ, to enhance मतलब क्या होता है? Influence करना, बढ़ावा देना. I don't want to jot down the fact in this diary the way most people do, but I want the diary to be my friend, and I'm going to call this friend Kitty. Last line में mention किया. Okay, so jot down. ये word मैं अक्सर use किया करता हूँ. Jot down. Okay, jot down means what? Jot down the points. I generally say. So jot down means write quickly, note it down quickly, in a hurry. That is jot down. Okay. So to enhance the image of this long-awaited friend in my imagination, हाँ लिखना तुरंत जल्दबाजी में लिखना, संक्षेप में लिखना, बोल सकते हैं. तो देखिए अब माइंड में उन्होंने अपना एक इमेज बना रखा है ना कि हम मेरा दोस्त ऐसा होना चाहिए, मेरा दोस्त जिसके साथ में सब कुछ शेयर करो वो आगे किसी के साथ शेयर ना करे, ऐसा होना चाहिए. So she has made an image, and to enhance that image of this long awaited friend, एक दोस्त का इंतजार है ना, लंबे अरसे से उनको इंतजार है, उनका इमेजिनेशन कि मेरा एक दोस्त होगा और वो ऐसा होगा. तो हम सभी के माइंड में ऐसा एक इमेजिनेशन रहता है. C2 is not the exception. C2 has such an image. I don't want to jot down the fact in this diary the way most people do. उसी से उसी has अब उनके इमेजिनेशन में जो कुछ भी है इस डायरी में वो सब कुछ जैसे कि लोग लिखा करते हैं वो नहीं लिखना चाहती. उनका एक्सपेक्टेशन सब क्या क्या है, एक दोस्त को लेके वो क्या सोचती है, ऐसा नहीं. वो बस अपने मन की बात बताना चाहती है, शेयर करना चाहती है. बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. तो अब वो डायरी को अपना एक फ्रेंड बनाना चाहती है और उसका एक नाम भी सोच रखा है. सी वुड नेम हर किटी. किटी उनका नाम. तो जो भी उनके डायरी में इंट्रीज हैं देखना शुरू में डियर किटी करके आपको मिलेगा. ओके, सो देयर द फर्स्ट पार्ट एंड्स. तो बहुत ज़्यादा बात इसमें बताया नहीं गया है. इनफैक्ट इन द फर्स्ट पार्ट ये जो पार्ट लिखा गया है दिस इज नॉट एग्जैक्टली द डायरी एंट्री. ये एग्जैक्टली डायरी एंट्री भी नहीं है ना, ये उससे बाहर का, उससे ऊपर ऊपर का बात है. क्योंकि डायरी एंट्री या तो इट इज नॉट मेंशन, डेट वगैरह इसमें दिया नहीं है. सो आई थॉट दैट इट इज नॉट अ डायरी एंट्री, क्योंकि अगले पेज नंबर 52 में आप देखोगे इट इज मेंशन सैटरडे 20th June 1942 डियरेस्ट किटी. वो उनका एग्जैक्ट ओरिजिनल वर्जन, ओरिजिनल डायरी जो उन्होंने लिखा. सो दिस इज द ऑथर्स statement, way of introducing us to Kitty, introducing us to Anne Frank. है ना, एक तरह से ऑथर हमें किटी और एन फ्रैंक के साथ इंट्रोड्यूस कर रहा है, हमें ये बता रहा है कि डायरी की जरूरत ही क्यों पड़ी. फाइन, चलिए. सो देयर आर 3 क्वेश्चंस बट वी हैव वेरी लिमिटेड टाइम. इट इज ऑलरेडी 45. वी हैव अनदर क्लास एट 10. सो within 5 minutes I'm going to conclude it. आंसर मैं पूरा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा. देख लेते हैं क्या क्वेश्चन टफ है, क्वेश्चन हम लोग नहीं समझ पा रहे, एंड देन वी विल एंड. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? तो डायरी लिखना उनके लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस क्यों था? वो बोलती है ना, इट्स नॉट दैट आई हैव नॉट रिटन एनीथिंग बिफोर सो इट इज स्ट्रेंज. पहले कुछ नहीं लिखी है इसलिए स्ट्रेंज है, ऐसा नहीं है. Why it is so? She was thinking that why anyone would be interested, or why even me will be interested in the thoughts, in the musing of a 13-year-old girl. What is there to read? What is there to discuss about? एंड फ्रैंक का पर्सनल फीलिंग है तो इसमें कोई इंटरेस्ट क्यों लेगा? दिस इज वाई शी कंसिडर्ड इट अ स्ट्रेंज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 says, why does Anne want to keep a diary? एक सेंटेंस में आंसर है, because she considered herself not involved with any such trustworthy friend, because she thinks that she has no friend, and so she made diary her best friend. Okay, अपने तरीके से आप लिखोगे. Question number 3.
Why did Anne think she could confide more in her diary than in people? It is the matter of trust. बात विश्वास पे है. So Anne hardly considers, says herself that it may be her fault, that she is not thinking, she is not considering, she is not taking it positively that others should not share the matter. या फिर कुछ अपने दोस्तों के ऐसा हरकत उन्होंने देखा जिससे लगा कि नहीं इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता. This is the way we judge, isn't it? So you write the answers in your own way. ओके आप अपने तरीके से आंसर्स लिखोगे. और थर्ड क्वेश्चन के आंसर में व्हाई डिड एन फ्रैंक व्हाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी. डायरी में वो क्यों कन्फाइड करेगी? बिकॉज डायरी हैव मोर पेशेंस. दे आर नॉट गोइंग टू डिस्ट्रस्ट यू, दे विल बी ऑलवेज लॉयल, फेथफुल टू यू. ठीक है. हाँ, होमवर्क आपका ये था. ओके, बिफोर आई एंड, your homework was ये comprehension check का 3 question तो है ही. 3 questions from the of this comprehension check from the first part that we completed. Just another homework, I want to listen your reading skill. So you need to record a paragraph of any paragraph from English book. आप हो सके तो इस डायरी वाला ही पढ़ लेना. Okay, इसी चैप्टर से a paragraph and you will send me the audio, and the model reading is going to be sent to different groups of our school. Okay, got it? तो ये दो टास्क रहेगा. 3 क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंशन चेक, और मुझे आप लोगों को भेजना है आपका मॉडल रीडिंग. ओके, आई वांट टू लिसन योर रीडिंग. चलिए फिर रुकते हैं अभी के लिए. वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट पार्ट. सो द नेक्स्ट पार्ट दैट टू इज अ वेरी शॉर्ट, एक सिंगल पेज का है. तो एक दिन में हमारा ये पार्ट पूरा हो जाएगा. एंड द एंट्री, डायरी एंट्री वाला जो भी है वो भी एक क्लास में पूरा कर लेंगे. सो 2 more classes, we will go slowly but we will not skip the matter, leaving it unlearned. We will learn everything. Okay. हाँ अंकित, मैंने बोला था बाय बी वाई नहीं, बी वाई ई. करेक्शन हमेशा होते रहना चाहिए, मॉडिफिकेशन हमेशा होते रहना चाहिए. ऑलराइट, सो लेट इट बी. ऑल द बेस्ट. Wish you a very good day. Keep learning, enhance yourself, keep improving, keep smiling. Thank you. Bye bye. Have a good day.